Okay, hi everyone. Welcome to this session. This is live with my students from SCIT. ये सेशन बहुत अलग होने वाला है गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ बिकॉज हम स्नैप के बारे में भी बात करेंगे, बट हमने सोचा हम थोड़ा कुछ अलग कर लेते हैं. SCIT इज वन ऑफ द I would say one of the most reputed institution out there under the Symbiosis umbrella. इनके बारे में बहुत ज्यादा बात होगी, इनके बच्चे ही बता देंगे, बट आज हम बात करना चाह रहे हैं टेक्नो मैनेजरियल रोल्स के बारे में, जो एक इंजीनियर भी एलिजिबल है और एक नॉन इंजीनियर भी उसके लिए एलिजिबल है. एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि टेक्नो मैनेजरियल जो रोल्स है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं. इनकी मतलब दे आर गुड. व्हाई? बिकॉज पैसा बहुत अच्छा है, ऑन साइट चांसेस बहुत अच्छे हैं, तुमको खुद से पढ़ाई बाहर करने के लिए जाने का जरूरत नहीं है, तुमको कंपनी खुद बाहर भेज देगा. एंड देयर आर गुड डेस्टिनेशंस लाइक यू हैव यूएसए, you've got UK, you've got Europe, अभी फिलीपींस भी मेरे ख्याल से डूइंग रियली गुड. सो टेक्नो मैनेजर में यू गेट टू हैंडल टीम ऑल्सो, यू कैन ट्रैवल ऑल्सो. सो आई थिंक मुझे लगता है ना ये एक कंसल्टिंग प्लस प्रॉडमैन प्लस का कॉम्बिनेशन बना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एंड हु कैन टेल अस दिस बेटर देन SCIT फोक्स, जो नोन है कॉलेज, इतने सालों से लेगेसी बना के रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. एंड इनकी एवरेज राउंड अबाउट 13 लाख तक अभी है. एंड इनके हाईएस्ट पैकेज 30 क्रॉस कर ही लेता है ना हर साल, आप लोगों का 30 लाख के ऊपर चली जाता है. So guys, I welcome you all. Welcome Sulakshana, welcome Vedant, welcome Shreyas and welcome Prashant. Thank you so very much for joining in. Guys, बने रहना इस सेशन में, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा. नंबर वन, हाउ आर दिस रोल्स यार? ये जो टेक्नो मैनेजर वाले रोल्स है, इसमें क्या क्या आता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है? Sulakshana, you want to go first? Ladies first? Yeah. So Okay, if you're going for a techno managerial role, so you are getting a deep dive in the technical aspect as well as you will have the domain knowledge as well. So there are like different domains that you can go for. You have finance, you have marketing, you have HR. So having that plus point about knowing the tech side as well helps you a lot. And it is a great thing to have it in your resume. So if you ask for the roles that you can go for, you have roles like you can either go for consulting, you can go as a business analyst, a data analyst, a data scientist. So there are different roles you can opt for. That is all dependent on what domain you want to go for and how technical and how business oriented you want to go for. So yeah, that's my opinion about techno management roles. I think Vedant, yeah, Prashant would like or Shreyas would explain a bit more about it. I would like to add that it's not just about IT. Whatever we think like, it's more of into a culmination of everything that we as SCITians are taught, and the roles that we get also are aligned with it. So particularly talking about BA domain, we have BA in all domains, starting from data science to infosec to systems, and coming to consulting. Again, we have specialized domains in which we can in which we are offered consulting profiles. And pretty much I think everything is covered by Sulakshana on terms of what roles are offered. okay. So adding to the point. Yeah, go ahead. Yeah, so when students hear the buzzword techno manager, they always think that they will land up in some IT company. But as my colleagues had already spoken, various consulting agencies, BFSI, manufacturing and FMCG companies have already actively participated in the campus recruitment programs, and diverse roles such as business analyst, data scientist, project management, techno-functional consultant are offered over here. ओके, यहाँ पे ना एक मैं छोटा एड ऑन करना चाहूंगा. बहुत सारे बच्चे हैं ना जो भी अभी वाईटी पे है, या फिर अगर आप ये वीडियो वापस भी देख रहे हो ना गाइस, आप लोगों को लगेगा कि यार मतलब एक कॉमर्स वाले बंदे का या फिर एक बैफ BMS वाले बंदे का क्या ही काम है आईटी में. आई टेल यू, मैं तो एक इंजीनियर नहीं हूँ बाय द वे. बहुत सारे बच्चे इंजीनियर है, 85% तो मेरे ख्याल से इंजीनियर ही एमबी में. बट आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स. मेरा पहला जॉब जो लगा था वो फाइनेंस में लगा था. बट मैं राउंड अबाउट 9 मंथ्स के बाद आई फ्लू टू US. सो वहां पे मैंने वॉल स्ट्रीट वगैरह में काम किया, और ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि यार मतलब एक IT कंपनी मुझे बाहर भेज रही है. बिकॉज एक IT कंपनी के इतने ज्यादा क्लाइंट्स है ना जो BFSI सेक्टर से आते हैं, हमें उसका नॉलेज ही नहीं है. मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर हम TCS के बारे में बात करेंगे, TCS बहुत बड़ी कंपनी है. TCS का क्लाइंट जो है वो है डॉइचे बैंक. डॉइचे बैंक एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, एक रिटेल बैंक भी है, और वेल्थ मैनेजमेंट में भी वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं. सो नॉन इंजीनियर्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है
अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा कोडिंग हो गया, थोड़ा एसक्यूएल वगैरह वगैरह हो गया, आप लोग एक्चुअल में मचा सकते हो. बिकॉज नोइंग द आईटी पार्ट एंड नोइंग द फाइनेंस वाला पार्ट और बिजनेस वाला पार्ट और मैनेजमेंट वाला पार्ट कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू. यही नहीं, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ. मतलब अभी आप SCIT वाले भी बच्चे यहाँ पे हैं और YT वाले भी हैं. I remember one of my student was a BCom guy, and right after BCom he did from very good B school by the way. उसके बाद वो BCom plus MBA हो गया एंड 2-3 साल के बाद उसको Oracle ने उठा लिया कुछ 27-28 लाख के पैकेज में. एंड आई वाज सरप्राइज. मैं बोला यार Oracle तो कंप्लीटली तुम्हारा अलग ही डोमेन है, पर तू तो BCom था और तू MBA फाइनेंस था, तो तुझे वहां पे कैसे ले लिया? सो देट मी सेड दैट कि नहीं सर, यहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फाइनेंस के रोल्स भी बहुत ज्यादा है. सो जो नॉन इंजीनियर्स है, आपको अगर रिवेंज लेना है इंजीनियर्स से, तो आप यहाँ पे ले सकते हो उनकी जॉब लेके. एंड जेन्युइनली वहां पे ना बहुत ज्यादा स्कोप है. तो आई एम श्योर सुलक्षणा हो, प्रशांत हो या फिर अपना श्रेयस हो, आई होप यू गाइस एग्री टू दिस कि सर नॉन इंजीनियर्स भी कंपटीशन दे रहे हैं, है ना? सो अगर आप में से कोई नॉन इंजीनियर है तो थोड़ा ऐड करना. एंड सेकेंडली व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड ना फ्रॉम यू गाइस, आपका करिकुलम के बारे में मैंने बहुत सुना है. मतलब आपके एलुमनाइज भी बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैंने बाहर के बच्चों से भी बहुत ज्यादा बात सुनी है आपके करिकुलम के बारे में. एक बारी वो बता देना दैट हाउ योर करिकुलम हैज बीन शेप्ड इन अ वे व्हिच कॉम्पेंसेट और व्हिच हेल्प स्टूडेंट्स टू डू वेरी वेल इन दिस इंडस्ट्रीज यार. Go ahead, anybody. Yeah, so for us, we in SCIT, we have basically providing 2 courses. One is for IT business management and one is for data science and data analytics. So I'll explain data science and data analytics. I'm a first year student in data science and data analytics, so I'll explain that. I'll be able to explain that a bit more. So in data science and data analytics, there's 2 types of specializations you can go for, artificial intelligence or the analytics side. So if you are thinking, if you are a non-engineer or an engineer, whatever it is, you don't have to worry about anything because we are providing a foundation course. You will be given the foundation course of how, like the basics of Python to SQL, what all you need to learn to start your career in data science and data analytics will be provided. And then like for data science, these courses, what all are the basic steps that is also being taught to us by data preparation or data mining. And also, it's not just the technical part that we'll be learning in data science and data analytics course. You will be learning all the domains. So we, in our first year, we have principles of management. You are learning finance. You are learning HR. You are learning marketing. And then on top of that, you are adding your technical skills in each of these domains. So you have, so if you are a data science or a data analytics and a data analytics student, you are learning marketing analytics. You have an option to learn marketing analytics. You have an option to learn social media analytics, supply chain analytics. So these are the different options that you are given in that part. So you're not just doing core technical job. You are learning the entire domain, and this will help you grow horizontally as well as vertically. So you will be knowing everything and anything. So you will be fit to work everywhere. That is my opinion. So on data science and data analytics, and anyone from ITBM could explain about their course as well. Can I just come in here if you guys allow me? है ना? Okay, so है ना, ये BA के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. जो भी बच्चा लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल फिर बाद में, so हमें लगता है ना कि अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, so जैसे सुलक्षणा ने कहा कि एक बिजनेस एनालिस्ट जो होता है ना, उसका नाम खाली बिजनेस एनालिस्ट है, पर यार वो कंसल्टेंट का ही काम करता है अगर आप देखोगे तो. सो जो मेरा एंगल है बिजनेस एनालिस्ट की तरफ, अगर आप मान लो किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, सो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज लाइक केपीआईटी कमिंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस वगैरह वगैरह, इसमें ना गाइस एक डिपार्टमेंट होता है, एक फंक्शन होता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन मैनेजमेंट. ये ट्रांजिशन मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट बंदे होते हैं. ये एमबीए होते हैं, ये इंजीनियर्स भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं. इनका पता है काम क्या होता है. आप इन्फोसिस है, आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो, आप कॉमर्स हो, बीकॉम हो, जो भी है, और आप फिर इंजीनियर हो, और आपका क्लाइंट बैठा है मान लो स्वीडन में बैठा है, पोलैंड में बैठा है, या फिर वो यूके में बैठा है. सो उसका बिजनेस जब ट्रांसफर होता है इंडिया में, तब ये जो बीएस होते हैं वो हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं. वहां पे डॉक्यूमेंटेशन आ गया, क्लाइंट के साथ बात करना आ गया, यहाँ तक कि आप सीएफओ और सीईओ से भी बात करते हो. पूरा बिजनेस आप यहाँ पे लेके आते हो, उसको सेटल करते हो. सो ये हमने भी करा था हमारे ग्रेजुएशन के बाद, एंड देयर आई हैड अ चांस टू लर्न सिक्स सिग्मा. तब जाके हम ग्रीन बेल्ट और उसके ऊपर जाके ब्लैक बेल्ट तक गए. और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है. अगर आप ये वाली जॉब्स करते हो तो ये वाली जॉब्स मोनोटोनस होती नहीं है. घूमने उमने को मिलता है मस्त बिजनेस क्लास में,
थोड़ा ऐशोआराम भी हो जाता है। सो जितने बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं टेक्निकल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको चीजें समझाने के लिए। सो ये एक बिजनेस एनालिस्ट की लाइफ होती है। जस्ट कंसल्टेंट का नाम नहीं लगा, अरे मेरे ख्याल से बीए होता है, बीए के बाद सीनियर कंसल्टेंट समथिंग समथिंग हो जाता है। आप जरा एक्सप्लेन कर देना अभी। हाँ, IITBM का कोई बच्चा है तो एक्सप्लेन कर देना। Okay, so adding to whatever sir you just mentioned, so we particularly have subjects in ITBM that are related towards water transition management that you just explained. So there is subjects like application portfolio management, which talks about how a transition should happen or how should we actually eliminate or select which applications do we need to keep forward or do we need to eliminate while the transition is happening. But in ITBM, talking about the technical aspect is little less, but the management, the understanding of the technicalities is what we focus on more, and how everything should be managed. So we have specializations like information security management, systems. We also have a specialization called as software solution management. So students can choose according to this. I think Prashant can add more. Yeah, so as Shreyas already mentioned, we also have a new specialization which basically started for the 2023-2025 batch, that is digital transformation. So this is a buzzword right now, and so SCIT also inculcated this subject in their curriculum, which basically provides students with a deep understanding of digital technologies, which fosters innovation and strategic thinking in them. Also, we have a data science specialization in ITBM as well, where students can select those particular electives, which basically provides customized solutions to the contemporary data problems around, which basically arises in the business world. So yeah, that pretty much sums up everything about the ITBM specialization. One thing that I would like to add is I'll like to answer two of your questions. The first one is, can a non-engineer come into SCIT and perform well? So me being a non-engineer, I am currently in the second year of data science and data analytics course. I was able to cope up very well with the course, being a non-engineer, as we have those foundational courses at the start of our curriculum, which sets everyone on one level, and then we take on from there, be it an engineer, be it a non-engineer. The second question that I would like to answer of yours, Ketan sir, is how well are we able to apply whatever we have learned? That was one of your question again. So to answer that question, I would like to say that while my internship, I was able to apply whatever I had learned in the first year of my curriculum over here at SCIT directly into my industry projects. It was not as if I was, out. I was on some different project. Or I had to do some extra. I had to take some extra effort to come on board and then take some extra time out to understand how the project is flowing and how the project is working. Basically, we almost found ourselves at home the moment we started the projects, and that pretty much is a testimony of how our curriculum is completely aligned with our industry wants. That's one point that I would like to highlight. तो ये कोडिंग वगैरह बच्चा लोग कर लेता है ना, मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर बैक तो नहीं लगता ना भाई, मतलब तो बच्चा परेशान, नॉन इंजीनियर सर फाइनेंस भी करो, अकाउंटिंग भी करो, और एक कोडिंग का ऊपर से आ गया। सो इज इट दैट डिफिकल्ट फॉर अ नॉन इंजीनियर, और ये हो जाता है आराम से? You get used to it, sir. अच्छा, you get used to it. हाँ, it takes time, but like you get used to it. ठीक है, I get that. So एक मे भी ट्रेड ऑफ होता होगा ना कि यार आप नॉन इंजीनियर को कोडिंग सिखा दो और नॉन इंजीनियर आपको अकाउंटिंग वगैरह सिखा देगा, ऐसा तो कुछ होता होगा ना तुम लोगों में? सर आई गेस वो बात हर MBA कॉलेज में होती है. परफेक्ट है. There's always a trade-off, sir. And also, it's not like the engineers will know everything. We also will be learning a lot of new stuff in the campus. Yeah. Perfect. Okay. So what I want to understand, if you guys are allowed to kind of, disclose these kind of information, like, what is the trend that you are looking at as far as the techno-managerial roles are concerned? हमने business analyst के बारे में तो बात करा. So can you give us more idea about associate consultant क्या होता है, consultant level पे क्या आता है, क्या प्रॉडमैन में यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, BFSI में क्या क्या रोल्स मिल सकते हैं, और क्या रोल आपके यहाँ पे आ रहे हैं,
अगर आप कुछ कंपनीज के नाम डिस्क्लोज कर सकते हो, रोल्स एंड पे पैकेजेस डिस्क्लोज कर सकते हो अगर अलाउड है तो, या फिर आप एक जेनरिक ओवरव्यू दे देना. Anybody can go ahead. Yes, you want to go ahead with this question? Yes, so talking about the roles and the levels and about, sir, you also questioned about product management. So yes, there are roles that are offered in product management or project management from our college. I interned with a company. My company name was Omine Technologies. It is a product-based organization. So I was working with the product team in the same domain as you mentioned. So there are consulting roles. In consulting roles, again, like Prashant and Sulakshana had mentioned. So in consulting, there are, depending on what our specialization is and what our majors are, we might be consulting. The roles that we get in consulting might be for information security domain, or maybe related to business analyst or a product or a project management domain. And the hierarchies, again, it differs with companies to companies how the senior level or associate level works. But generally, if you are a fresher or someone who has a 1 or 2 year work, it is usually a associate product manager or associate project manager, and a consultant for the consulting roles. Okay, nice. Anybody you want to add, Prashant or Sulakshana, in this? Yeah, so I interned at Accenture in the capacity of a business analyst for a US client in property and casualty domain. So during my tenure, my responsibilities basically encompassed in-depth research and analysis on the property and casualty insurance sector, and I also assisted with the requirement gathering by acting as a liaison between the client and the project team. So yeah, it is a kind of a techno-management role where you get the best of both worlds, working with the technical team as well as understanding the business aspects of it. So it leads to the holistic development of an individual. So I would now like Vedant to take over. So I interned at Ernst & Young as a business consultant. EY. And yeah. So Nice. I worked typically in the domain of third-party risk management. I did typical projects of third-party risk management. Also, me being from data science and data analytics batch, I was asked to work on the business intelligence part of it. So I was making I was basically handling some data analytics part of it. Nice. So being a non-engineer, he had an opportunity to work with EY, which is one of the big four, Yes, and doing amazingly good, by the way. It's got a very good market share, by the way. EY has been fantastically good eventually. And again, business intelligence में था, इसके भी बहुत ज़्यादा buzz है, and BI में बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं. It's one of the upcoming profile. So again, if you look at guys, IT non-engineers के perspective से अगर मैं देखूं, so एक जगह है आपके लिए जहाँ पे आप jobs कर सकते हो. And हमें लगता है कि IT के jobs, थोड़े बहुत boring and monotonous होते हैं. But I think that comes eventually in every industry यार, मतलब वो हर जगह पे है. बट डिपेंड करता है कि अगर आप एक टेक्नो मैनेजरियल रोल पे चलते हो तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मुझे ये बता दोगे कि इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे होती है, कि मान लो एक्सेंचर ज्वाइन किया, ईवाई ज्वाइन किया, आगे कैसे ग्रोथ होती है, या फिर अगर आप अपने एलुमनाई का कुछ मेंशन करोगे. अच्छा, मुझे ईवाई से याद आया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक एवरीबॉडी शुड लिसन दिस अप. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द डायरेक्टर मैम ने मुझे कहा था कि SCIT के जो एलुमनाई है, 5 ऐसे एलुमनाई हैं जो बिग 4 में पार्टनर के लेवल पे पहुंचे हैं. एंड पार्टनर इज ए ह्यूज लेवल का, इट्स लाइक क्लोज टू MD, मतलब उस कंपनी के करता धरता. वैसे देखा जाए, वैसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट दे मेक 1.5 करोड़ 2 करोड़ अ ईयर. अलग गेम है वो. एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू नो दैट कि यार SCIT, जो हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ IT के लिए है, जो मिसकंसेप्शन है, अगर वहां के एलुम इतना बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं लाइफ में, तो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन इंजीनियर्स आल्सो. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू मेक अ मेंशन. सो इफ यू कैन जस्ट टेल अस योर ट्रैजेक्टरी कि भाई सर देखो, 3 साल में आप मे बी 15-16 लाख पे आप चालू कर सकते हो, 3 साल में मे बी 22 लाख, 5 साल में मे बी, इफ यू कैन गिव अस अ ट्रैजेक्टरी दैट कैन हेल्प. Should I take that? Yes. Yeah. So talking about the consulting line,
So it starts from consultant for us at SCIT. There is a range of about 12 to 14 that we start with. Okay. And then in a One matter second, of 2 I'm to sorry 3 to years. interrupt, Vedant. कंसल्टेंट डायरेक्टली मिलता है या कंसल्टेंट के लिए वर्क एक्स होना जरूरी है 2-3 साल का? Sir, I don't have any work consultant? experience. I am a fresher, sir. I'm a complete fresher, sir. Oh wow. Oh wow. Sir, I'm a अच्छा, complete you know fresher. why I asked you this, Vedant? There is a reason why I asked you this. देखो कुछ कॉलेजेस है इंडिया में जो टियर 2 पे आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, दे आर बॉम्बे बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड, दिल्ली बेस्ड. वहां पे अगर आप देखोगे ना, ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 2-2.5 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, तब जाके आपको कंसल्टेंट की जॉब मिलती है. नहीं तो आप एक छोटे लेवल पे चालू करते हो. बट अगर यहाँ पे तुम्हारे कॉलेज में अगर वो चीज नहीं है, देन आई मस्ट अप्रिशिएट यू गाइस, बिकॉज ये बहुत बड़ी लेवल है. बिकॉज एक बीए को मेरे ख्याल से कंसल्टेंट जाने तक 3-3.5 साल रुकना पड़ता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और फिर वो पॉलिटिक्स खेलो, बॉस के साथ अच्छा करो, परफॉर्म करो, बहुत तामझाम. तो यहाँ पे सीधा 3 साल कम हो गया ना यार लाइफ का, सीधा कंसल्टेंट लेवल. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज. गो अहेड वेदांत, गो अहेड. Yeah. So we start with consultant level, sir. In a matter of 2 to 3 years, we get to senior consultant. Nice. Again, from again in a span of 2 to 3 years, 3 years to senior manager. As you go up the hierarchy, your promotion cycle might get delayed. I mean, in terms of as you go to higher positions, your promotion might take time. It might go fast as well. Depends on how you perform as a person, as an employee at the organization. But again, from senior manager, you take 2 to 3 years of max 4 years to get to director and then partner. That's what the consulting hierarchy is. So आप कह रहे हो 10 से 12 साल में you can reach out to the partner level if you really work your ass off. Yes. Oh, nice. देखो, एक तो you got to work your ass off, get a सीधा वर्टिकल वाला प्रमोशन इन हाउस, या फिर द बेस्ट मार्केट में जो चल रहा है स्विच 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 स्विच, 2 साल में स्विच, 4 साल में स्विच, 6 साल में स्विच, और पैकेज बढ़ते चलता है. कूल है. that was nice. Anybody want to cover any other domain? Like Shreyas, कोई other domain बता सकता है किसी इंडस्ट्री का? Sir, so talking about the non-consultant, agar product management, project management, if you look at like that, so we start from associate product manager roles. So, Oh, nice. So 2-3 years into that, we get to the role of a product manager / a project manager. After Nice. that, after again 2-3 years, there is a role of senior project manager or a product manager. And depending on how many verticals does the organization work in, we also might get the opportunities of being the assistant vice president or a vice president of products or something like that. Talking about organization which has these many verticals in them. Okay, nice. Anybody else want to cover any other domain or industry? Yeah, so as I already mentioned, that I interned at Accenture. So a fresher in Accenture who gets placed gets the role of a, I would say, analyst. Then an experienced who has more than around 2 years of experience, they get into senior business analyst role. Then after working for 1 to 2 years, then you get into a lead business analyst. Then another 2 years, if someone works really hard, then they can get into associate project manager in business analyst domain. And similarly, then the career progression happens to delivery manager, senior manager, and eventually they can get into Accenture leadership, like managing director. As we have already known that in Big Four, there are multiple partners, right? In Accenture, there are multiple managing directors, which we term as Accenture leadership. Nice. So yeah, it would take around 15 to 16 years to reach to MD level if one basically works diligently. Can somebody cover pre-sales? काफी इंटरेस्टिंग एक बंदे ने पूछा. Pre-sales कवर कर पाओगे आप? So a pre-sales related role specifically, I don't think there is a role that is exactly targeted towards pre-sales, because we in SCIT there is not a complete specialization for a sales or a marketing roles. But as you mentioned, there the consultings or the business analysts, they cover some aspects that are included in pre-sales. So we learn about it. We have actually a subject also managing pre-sales, but nice. Yeah. So there are roles there is a course that we have that is essentials of marketing management. There is a
course that we have for managing pre-sales. But a pre-sales role directly is not something that we get, but the consultants or the analyst work somewhere with the pre-sales team like that. अच्छा, तो जो बच्चों को ना प्री-सेल्स के बारे में जानना है ना, लेट मी गिव यू एन आइडिया. देखो, पहला चीज मैं ये कहूंगा, सिम्बाइसिस एज अ ब्रांड विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट इनटू दीस काइंड ऑफ रोल्स. और ये जो रोल्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा, अगर आप देखोगे, एक्सक्लूसिव रोल्स होते हैं. मैं आपको प्री-सेल्स का थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूँ. प्री-सेल्स कौन कंपनीज करती है? कि प्री-सेल्स वो कंपनीज करती है जिनके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं या फिर जिनके फॉरेन में ऑफिसेज होते हैं. सो प्री-सेल्स बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होता है जिनका इंटरनेशनल बिजनेस है, या फिर हम कहते हैं ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, अप्लाई लोकल, समथिंग लाइक दैट. इवन कंपनीज लाइक टाटा एंड इन्फोसिस हैव प्री-सेल्स पीपल. प्री-सेल्स का जो जॉब होता है, इट इज एज गुड एज अ कंसल्टेंट, बट वो डिपेंड करता है तुम कौन सी कंपनी में हो और कंपनी के क्या फंक्शन में हो. सो हम अभी ज्यादा क्रिटिकलिटी में नहीं चलेंगे, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ गाइस, प्री-सेल्स का मतलब क्या होता है. सो अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करूं, चलो मैं केपीओस के बारे में बात करता हूँ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ये जो केपीओस होते हैं, इनको हम बीपीओ की लेवल पे नहीं इनकी कर सकते, बिकॉज बीपीओ अलग है, केपीओ काफी ज्यादा बेटर होता है. कंपनीज लाइक eClasses इकलौता केपीओ है, अगेन फाउंडेड बाय द आई एम अहमदाबाद गाय, बाय द वे. ये इकलौता कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है. इट्स अ वेरी गुड मिड कैप स्टॉक, बाय द वे. इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक. इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय. नो रिकमेंडेशन दो, बट जस्ट अ सजेशन. एंड केपीयू के बारे में अगर मैं बात करूं, लाइक सदरलैंड इज देयर, यू नो, टीसीएस देयर, ई सब करके टाटा का कोई तो कंपनी है. एज अ प्री-सेल गाय, व्हाट यू डू इज, जो तुम्हारे फ्रंट एंड वाले जो लोग हैं, जो बिजनेस लेके आते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स को पकड़ते हैं, आप उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हो. सो उसमें टेक्नो स्ट्रैटेजी आ गया, उसमें फाइनेंस स्ट्रैटेजी आ गया, उसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आ गया, एंट्री बैरियर्स वाला स्ट्रैटेजी आ गया, वो पोर्टर 5 फोर्सेस वगैरह लगाना, सब कुछ आ गया. आई एम वेरी श्योर आप बच्चों ने भी वो पढ़ा होगा. सो एक प्री-सेल्स वाले का काम होता है एक पूरा का पूरा लैंडस्केप बनाना, कि यार ये जो है पीपीटी हो गया या फिर वो पूरा जो ज्ञान है, आप फ्रंट एंड वालों को दो, और फ्रंट एंड वाला बैठ के वहां पे आपकी डील क्रैक करेगा. सो प्री-सेल्स वाले जो होते हैं ना, इट इज द ओनली डिफरेंस इज दैट कि प्री-सेल्स वाला क्लाइंट के सामने बैठ नहीं सकता, पर जो दिमाग होता है वो प्री-सेल्स वाले का ही होता है. एंड प्री-सेल्स एक हिडन जेम है. अगर आपके पास सिम्बी का ब्रांड है, और अगर आपके पास कॉम स्किल्स है, और अगर आप एससीआईटी वगैरह के एलुम हो, तो आप प्री-सेल्स में बहुत अच्छा खासा कर सकते हो. एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन फ्रॉम कंसल्टेंट, दे मूव्ड टू प्री-सेल्स, बट एज ए मैनेजर, जहां पे वो टीम मैनेज करते हैं 10-12 लोगों का. सो प्री-सेल्स में पैसा बहुत है, प्री-सेल्स में फॉरेन अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एंड यू हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. यू एंजॉय योर वर्क, हर दिन कुछ ना कुछ नया है, इट्स नॉट मोनोटोनस एट ऑल. सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन बाय द वे. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं परसेंटाइल क्या है, डिस्क्लोज करना है. परसेंटाइल फॉर्म भरे या ना भरे, उनको एक रफ आइडिया देना है. अगर आपके प्रोटोकॉल अगर बोलते तो बोल देना. मैं तो कहूंगा भर दो फॉर्म, पे लोड नहीं है. Okay, if you wanna skip that, you can skip that. We'll move ahead to the next thing. Somebody Sir, asked me- I was waiting for someone to answer. I'll take that question. So, everyone in the panel is around 80 percentile. So, and the cutoff, as you know, that it moves around every year depending on the admissions, but around 80 percentile is a good number. So यार, ये तो अच्छी बात होगी. मान लो अगर 80% लेके आता है, या फिर 85-90, ऐसा नहीं कि 80 वाले ही सब होंगे, 90 वाले 92 वाले भी होंगे. मेरे खुद के बच्चे, सो आई नो दैट. सो इफ यू मेक लेट्स से 90% पे, अगर तुम्हारा एवरेज 13 लाख है, तो डेफिनेटली 20-25 लाख वाली भी कंपनीज होगी, है ना. तो अगर आप उस ब्रैकेट में भी जाते हो, इट्स अ गुड डील यार, है ना. मतलब एक 80-85-90 वाला बंदा अगर 20-25-30 लाख की सैलरी लेके निकलता है, नॉट दैट बैड एट ऑल, नॉट दैट बैड एट ऑल. सो गाइस देखो, अगर आपको लगता है कि सर मैं 80-85-90% लेके आ सकता हूँ, विच इज कितना मार्क्स वेदांत, 25 मार्क्स, कितना 30? Sir, I got around 32 out of. हाँ, लास्ट से थोड़ी कट ऑफ ड्रॉप. हाँ, 30 मार्क्स मतलब 50% पेपर, वो तो आप आराम से ला सकते हो, उसमें कोई लोड नहीं है. सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर एससीआईटी एज अ वेरी गुड ऑप्शन. ठीक है. नॉन इंजीनियर्स ने फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए ना. डेफिनेटली भरना चाहिए. Cool. Anything else you guys want to cover? Sulakshana, Prashant, Akshay, sorry, Shreyas, Vedant, anything you want to cover specifically to SCIT? Meanwhile, I'll just check the questions as well. Yeah, so only one thing, don't be worried you're a non-engineer or an engineer. Anyone who has the drive to study and who can cope up, like we have the will to learn, will be able to cope up with the curriculum in SCIT, be it ITBM or is it DSDA. If you have a liking towards the IT sector and if you want to do a techno-managerial role, be confident, fill the form
join SCIT, I would say. Any other advantages? भाई देव इनका कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस के बाहर ही सब मिलता है, मैगी वैगी चाय वाय सब कुछ मिल जाता है, काफी हैपनिंग प्लेस है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू कवर? एनी अच्छा बाय द वे एक चीज मेरे दिमाग में आई, वेदांत बस नोट डाउन कर लेना, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे यार आप लोग, तो कुछ ऐसा है आपका किसी के साथ टाई अप वगैरह है कि सर हम पीएमपी कराते हैं, हम सिक्स सिग्मा वगैरह कराते हैं, कुछ ऐसा फंडा है? जैसे SIOM मुझे पता है वो कंपलसरी अंदर जाने के बाद ना वो सिक्स सिग्मा वगैरह कराता है. आई एम वेरी श्योर आप लोगों के भी टाई अप्स होंगे. यू वांट टू शेयर दैट विद किड्स? Sir, we have a component in our curriculum which is flexi credit course, अच्छा. and in that flexi credit course, whatever is actually, I mean, like in the contemporary market, whatever is booming, basically we have courses aligned with that. So yeah, we have had courses of Six Sigma as well. Oh nice, that's a good ad. अच्छा अभी यहाँ पे थोड़े से दंगे हो सकते हैं बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे क्वेश्चन आया है, विच इज बेटर ITBM और DSDA? अभी आपको भाई मुझे बताना है ITBM और DSDA, और बच्चे पूछते ही पूछते ऐसे क्वेश्चन. बोलो, who wants to go first? Yeah, I would like to take over this question. So there is no black and white answer to this type question, to be honest. ये का आंसर है पक्का. Definitely. And it also depends on one's individual interest levels. So I would like to give a generic answer which would basically solve all the queries in the minds of the audience over here. So people who in ITBM specialization can basically get roles like information security, business analyst, product management, etc., which are comparatively less technical. So if someone is basically looking for a role which is less technical, then they can basically go for ITBM specialization. Whereas in DSDA, there are basically various roles such as data analyst, data scientist, etc., which basically focuses more on hands-on tools and techno-functional roles as well. So people who are slightly more inclined towards coding and all can prefer DSDA specialization. In the end, it all boils down to how well one basically does in that particular course and how hardworking they are. Perfect. Perfect. I hope that answers the question. Anything else if you guys have to cover, you guys can go ahead. Do let me know. So we spoke a lot about academics and placements. One thing that I would like to add is, apart from academics and placements, we have a lot of extracurricular activities as well, from guest lectures to events, to sports. We have a lot of things happening on campus. So it's not just the curriculum which makes us confident. I believe that every student at SCIT, his confidence gets boosted because of all the extracurricular activities that the institute in a way wants and asks you to participate into. And at the end of the day, it adds a lot of confidence into one's personality, and which reflects in the end when you go out in the market. That's what I would like to say. And the thing is, like in our campus, we have a lot of committees as well that we are working at. Like there are a lot of committees. So you are like having that real life experience of how you will work as a team, how you manage your work, how you set out priorities, along with your studies, how to deal with the work that you have at a committee. So you're literally learning all the basic concepts of a manager. So you will be able to tackle it when you leave the college as well. Whatever, anything that comes your way, you will be able to tackle anything, I would say. Perfect. Cool. So guys, if we have no more questions or pointers to cover, we can call it a day. एंड बाय द वे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जो भी सिम्बाइसिस को फॉलो करना चाहते हैं या फिर जो भी स्नैप एग्जाम दे रहे हैं, बाय द वे SCIT हो, SIBM पुणे हो, SIDTM हो, SCMHRD हो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज SCIT के साथ हमारे आने वाले दिनों में और ज्यादा सेशंस होंगे, इंडिविजुअल होंगे, कुछ हम रिकॉर्डेड पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं, कुछ हम YT लाइव लेक्चर्स लेने आने वाले हैं. सो यू गाइस कैन स्टे अपडेटेड. सो अगर आपका बहुत इंटरेस्ट SCIT की तरफ है, आपको वहां पे भी कंटेंट मिलेगा, SIDTM उसका भी कंटेंट मिलेगा, SIBM पुणे उसका भी कंटेंट मिलेगा, एंड आल्सो दे ऑल विल बी देयर टू हेल्प यू इवेंचुअली एंड गाइड यू आल्सो. इनके सोशल्स भी होंगे मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो भी फॉलो करना सो दैट यू गेट एन अपडेट. Yeah, sir. So that is what I wanted to say, ki to all the aspirants out there, if you have any queries or any questions related to anything about SCIT, you can reach out to any of us here in the panel, in any on any platform, and also you can follow our Instagram page for any updates on the college.
Cool है. Thank you so very much, Sulakshana, Prashant, Shreyas, and Vedant for joining in and giving some time to the kids. The session was really good. I thoroughly enjoyed it. I hope all the kids out there, all the students out there must have enjoyed it. ऐसे बहुत सारे सेशंस आपके लिए लेके आएंगे IT के डिमांड पे, रोल्स वगैरह के बारे में. And that's it from our side, guys. I would love to see you guys again.